सब एक दूसरे को जगा रहे होते हैं, तुम लोग सो रहे हो, देखो बांग्लादेश जागा हुआ है, तुम लोग सो रहे हो तो नेपाल जाग गया। लेकिन वो जो कहने वाला है वो खुद सो रहा है, मतलब। तो आप मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपका नंबर आएगा तो आप प्लीज मुझे ये जरूर बताइएगा हमें करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए, और वो जो करना है वो प्रैक्टिकल हो, सब लोग उसको फॉलो भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास जनाब मोहम्मद असलम साहब ने जो काम किया है, वैसे तो आप देखें कि मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है कुछ चीज़ों में तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो कि आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सब लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट लेते हैं, बाहर भी खरीदते हैं और खुशी लेते हैं। और यहाँ पर जो फ़ैन बनते हैं, यहाँ जो केबल्स बनती हैं, देयर आर सो मेनी आइटम्स, सो मेनी थिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो उमर ने हमसे ये बात कही कि जी हमें अपनी क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, और एक दिन उस क्वालिटी को लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देखें गुजरात में बेइंतहा चीज़ें बनती हैं, बेइंतहा बनती है, रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। मेरा परसेप्शन ये है कि वाकई रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हम इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। हमें डॉक्टर तलाश करना होता है तो हम जाके 10 लोगों से पूछ लेते हैं, अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। हमें इसकी तरफ भी आना चाहिए। असलम साहब जो हैं, इन्होंने ये बेसिकली पैनल मैन्युफैक्चरर थे, एलवी पैनल्स ये बनाते थे, लेकिन साथ साथ इनके दिमाग में ये आया कि ये जो कॉम्पैक्ट बस वेज है उसमें कुछ लोगों ने उनको यकीनन कहा होगा और इनको टेम्पटेशन दी होगी, लेकिन बात यह है कि ये बात तो बहुत से लोगों से कही गई थी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने बहुत से मैन्युफैक्चरर से कहा कि भाई जो हमारी नीड है इस वक्त, जो डिमांड आपकी क्रिएट हो रही है, उस पर क्यों नहीं जाते। तो असलम ने 10 साल पहले, मुझसे छोटे हैं इसलिए मैं असलम कह रहा हूँ, असलम साहब हो, तो असलम 10 साल पहले ये जो एक स्टार्ट किया अपना, बहुत इनको डिस्करेज किया गया, बहुत इसकी मुश्किलात थी। तो इनका ये सफ़र अब तक का कैसा रहा, क्या हुआ, हम इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। और इसमें असलम साहब देखिए, अगेन हमें वो भी टिप्स चाहिए, सिर्फ आपकी वो नहीं चाहिए हिस्ट्री कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम, हमें ये चाहिए कि आपने उन प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, कैसे उसको ऊपर करके आगे बढ़ गए, उन बैरियर्स को। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया पहले तो IEEE का शुक्रिया कि जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और मुश्किलात हमारी सुनने के लिए, जैसे असगर सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि आपको क्या मुश्किलात आई, क्या मामला हुए, कैसे आपने स्टार्टअप कैसे था। तो मैं इम्पोर्टेड बस पे ली, मैंने कोई 15-16 साल पहले किसी एक नाम नहीं मैं लूँगा, ब्रांड था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे एक फॉर्म भेजा कि यार ये फिल करके दें कि आप ये किसी आर्मी के अदारे में नहीं लगाएंगे, ना एटॉमिक एनर्जी में लगाएंगे, ना किसी और जगह। मेरे पास आज भी वो ऑन रिकॉर्डेड है। तो मेरे दिल में आया मैं कोई यूरेनियम खरीद रहा हूँ इनसे या क्या चीज़ खरीद जो मैं इसके ऊपर इनका इतना बड़ा लेटर साइन करके दूँ। मैं अपनी आर्मी में नहीं दे सकता, एटॉमिक एनर्जी इदारे में नहीं दे सकता, कहाँ पे देना है मुझे। मैंने कहा यार ये क्या रॉकेट साइंस है, क्या है। तो मैंने उसको खोल लिया, एक प्रोडक्ट थी मेरे पास, मुझे शौक पैदा हुआ कि यार इसको किया जाना चाहिए। उस वक्त अगर मैं इसका टोटल पैकेज बनाता कि मैं ये किस तरह इसको लेकर चलूँगा, क्या क्या मुश्किलात आएंगी, तो शायद मैं ये कर ही ना पाता। मेरे दिमाग में सिर्फ ये फिट हो गया कि मुझे अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, बस ये एक एम था मेरा। क्योंकि मैं सीखने वालों में से था, मैं सीखने वाले लोगों में से था। मुझे याद है कि मैं डिप्लोमा कर रहा, एसोसिएट इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल में 92 में पास आउट हुआ मैं। तो मुझे वर्कशॉप में ले गए, नीचे अमीन साहब हमारे एक टेक्निकल थे, वो हेड थे, इंचार्ज थे। तो मैंने कहा यार मुझे आज कुछ सीखना है, नया सीखना है, यहाँ से कैसे सीखूंगा। डीसी मोटर हमने पढ़नी, तो डीसी मोटर को उन्होंने चेक करवाना था हमें। तो मैंने उसमें से ना चलते चलते ना उसका एक कार निकाला और जेब में डाल लिया पॉकेट में। तो ये मैं शुरू से ही इसी तरह सीखने वालों में से था। अच्छा, मैंने वो पॉकेट में डाल लिया। मैंने सोच रहा था इसको कैसे टेस्ट करते हुए ये आएंगे, ये फॉल्ट कैसे ढूंढेंगे। तो जैसे ही वो उन्होंने कोई आधा घंटा लगाया, एक ओहम मीटर पहले हुआ करती थी, MEM के वो सुई वाले मीटर चलते थे, तो उन्होंने मीटर से टेस्ट करते उस पर पहुंचे। तो मैंने फटाफट किट से निकाल के वो दे दिया। उन्होंने बड़े गौर मुझे देखा। तो मैंने कहा सर मैंने ये देखना था इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, अगर फॉल्ट आएगा तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा।
तो ये मेरे अंदर एक शुरू में अल्लाह की मेहरबानी थी मुझ पे, माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, मेरे में सीखने वाली चीजें थी। तो मैं किसी भी फॉर्म, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो सीख रहा हूँ। इससे पहले मुझे यहाँ पर लाया गया, मुझे खालिद परवेज साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे धक्का लगाया कि यार तू इधर आ भाई, इधर लगाएगा तो लोगों को पता चलेगा मेक इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान क्या है। मुश्किलात मुझे ये रही, सॉरी मैं अपने टॉपिक से इधर उधर हो जाऊं, स्टोरी वो मुझे कहेंगे कि बाद में कहीं सुना आपको, मैं कर दूंगा जी जी। लेकिन मुश्किलात ये रही कि ना तो पूरे पाकिस्तान में कोई अच्छी लैब है हमारे पास जिससे हम अपने कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकें, ना कोई छोटा सा दारा। हालांकि मैंने बैरियर टाउन के कोई ऑनर थे, मैंने उनको मैसेज भिजवाया, मेरे एक मिलने वाले थे उनके जरिए, कि यार आप मस्जिद तो इतनी बड़ी बना रहे हैं, सॉरी टू से मैं खुद भी मुसलमान हूँ, सूफी आदमी हूँ, लेकिन मैं मस्जिदों के खिलाफ नहीं हूँ, बट डॉक्टर साहब ने बात की कि इंडस्ट्री को आगे लेके कैसे है, तो उसके लिए हमें R&D सेक्शन बनाने चाहिए। बड़ी मस्जिद तो बना दी 50 लाख लोगों के लिए या 5 लाख लोगों के लिए, लेकिन हमें R&D की एक जगह अच्छी नहीं मिलती जहां पर हम आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, अपना कोई मटेरियल टेस्ट करवा सकें। मुझे फायर रिटार्डेंट मटेरियल बनवाने थे इंसुलेटर्स के लिए, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई लैब नहीं मिली, मुझे वो जाना पड़ा भाई अंदर देखें क्या क्या है, क्या इसमें चेक टेस्टिंग कैसी होगी, चेकिंग कैसी होगी, फायर रिटार्डेंट के ऊपर लिस्टेड क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी। मुझे तो सारी टीम ने सिखाया है, सॉरी टू से आप कंसल्टेंट हैं, मुझे सबसे ज्यादा जो सीखने को मिला वो कंसल्टेंट से मिला। मैं जिसके पास प्रोडक्ट लेकर गया, मुझे आगे सोचा भाई तेरे पास टेस्ट केड़ा है, मुझे तो अब टेस्ट इस तरह याद हो गए ना कि मेरे अपने टेस्ट हो गए। IEC स्टैंडर्ड 61439-6 उसके अंदर कितने टेस्ट हैं, मैं सब पहले एक कंसल्टेंट के पास गया तो मैंने प्रोडक्ट रखी टेबल पे, कहता मैं कह नहीं सर पाकिस्तान च बनाई है, और नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं कह सर पाकिस्तान च बनाई है, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ स्टैंडर्ड होंगे ने। मैं सर वो की होंगे, मैंने लिख के दे दो। उन्होंने 2 महीने लगाए, लिखे ही नहीं। मैंने फिर वो सर्च किया, मेरे पास एक तालिब इल्म पढ़ता था, आज वो इंजीनियरिंग करके आया था मेरे पास यूके से, और 1 साल के लिए उसके फादर ने मेरे पास भेज दिया कि यार पाकिस्तान में तो इसको जॉब नहीं मिल रही, इसने ड्रोन शोन बनाने हैं, तो इसको अपने साथ लगा ले, कभी बाहर जाएगा तो फिर जरा साथ चला जाएगा। तो मैंने बच्चे को अपने पास रखा, और वो इतना फीस बच्चा था, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियर करके अब वो यूएस से लगे हुआ है। उसने फिर हेल्प की, मेरे लिए स्टैंडर्ड ढूंढे, तो सर $500 का है वे स्टैंडर्ड लेने आसी ना, खरीद लेने कर लेने। उन्होंने परचेज किया, उस बच्चे स्टैंडर्ड परचेज किया, तो मुझे उस दिन पता चला कि 61439-6 क्या होता है। सामान बेचने के लिए आपको जाकिर नाइक बनना पड़ेगा। अगर आपको आया नंबर, सूरत नंबर याद नहीं, मेरी टोपी लेके आ जाके जरा मेरी, मैं जाकिर नाइक की टोपी पहन लूं सर। वो सॉरी सर, वो पता है देखिए मुश्किलात, चैलेंजेस ये थे कि अभी से कोई 3 दिन पहले तक हमें लोग पूछ रहे थे यार तारे को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आ गया है, असी आज जो उन्होंने स्टॉल ते लिया के दिखाया है कि सर डेकरा भी करा लिया है। मैंने अपनी लिटरली अपनी फैक्ट्री को 1 साल आगे ले गया हूँ मैं, या 2 साल आगे ले गया हूँ। घर मैंने अब आके बनाना शुरू किया है, सिर्फ सारे का सारा पैसा लगाया मेक इन पाकिस्तान पे, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर। और ये टेस्ट आप सब पता कर सकते हैं, डेकरा या कैमा से जो लैब से मैंने पूरी रेंज करवा दी, 250 एम्पेयर से लेकर 5000 एम्पेयर तक की, इस पे कितने पैसे लगे होंगे। और पाकिस्तान में एक रवात लैब है जिसको हमें इंश्योरेंस देनी पड़ी कि आपका इक्विपमेंट हमारे भाई प्रोडक्ट की वजह से खराब नहीं होएगा, इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर दें। लिटरली मुझे पूरे पाकिस्तान में आप गाइड कीजिएगा कि यार असलम आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, ये चीज बनाएं और इस अदारे में ला के टेस्ट करवा दें। कोई एक अदारा दिखाइए मुझे, कोई प्लास्टिक का टेस्ट कराना हो, मेटलर्जी का टेस्ट करवाना हो, आपने किसी सर सिर्फ इधर वो मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो भी पता नहीं किस तरह के होते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच, और आपके पास दोबारा आएंगे सर। मैं नहीं मैं आपको बताता हूँ। असल में मसला ये है कि इनको जो है ना, मुझे कंसल्टेंट कहते हुए सॉरी करना पड़ रहा है। सर देखें, रक्षान साहब बैठे हुए हैं, मैं रक्षान साहब मेरे साथ प्रोजेक्ट किए हैं जी। मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा, मैं यार मेक इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान है। मैंने कहा यार फिर मैं तेरे नाल खलो जाना है। सेठ इकबाल के साथ आर्टिस्टिक हमने काम किया,
तो इन्होंने मेरे साथ खड़े हो गए कि भाई मैं इधर ग्रंटर रहेगा जी, एनो लान दो जी काम कर। देखिए इसके बहुत सारे नाम है, साहब ने मुझे दिए काम। हमने एक हदीस में वाकया सुना था कि किसी एक साहबी ने दीवार पे ओपनिंग की थी और उनसे पूछा क्यों किया, उन्होंने कहा जी इसमें हवा, रोशनी के लिए, हवा के लिए। तो आपने कहा अगर तुम्हारी नियत अजान सुनने की होती है तो हवा और जो है रोशनी तो वैसे ही आ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ आपकी मार्केटिंग वैसे ही हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों ने माशाल्लाह जैसे IEEE बदर एक्सपो वालों ने हमें बड़े चांस जाएगी। तो आप अपनी मार्केटिंग की फिक्र ना करें, आप जो फायदेमंद बातें वो बताने की कोशिश करें। बताएं जी, पूछें, आप सवाल पूछेंगे हम बताएंगे जी इंशाल्लाह। And our primary healthcare system is not built for the CDs and NCDs and not for, rather for maternal and child health. So let's move on to Dr. Asif Imam. So in our mixed health system, NGOs and CSOs have been filling up a major gap in the primary healthcare service provision. You, sir, have been the pioneer of utilizing an NGO platform for delivering quality primary healthcare services through the SINA initiative. What are the challenges and the successes for CSOs and NGOs to deliver universal healthcare in Pakistan at national as well as provincial level? Or what innovations or intersectoral collaborations are needed to engage the NGO sectors to achieve these SDGs? And what is the public policy vacuum in engaging the private sector for UHC and primary healthcare? Thank you very much. My name is Asif Imam. And although I'm an allergy immunology specialist, but my passion is primary healthcare. And actually, I moved from the US to set up a robust system of primary healthcare. So, as we all know, WHO says that 80 to 90% of healthcare needs can be met at the primary healthcare level. And if you look at Pakistan, we're just the opposite. We don't have any primary healthcare system at all. That's where the fundamental is, and this is what we need to address, that our foundation is actually not good. We don't have a good primary healthcare. The good news is that PMDC's new leadership, they have actually sort of revolutionized the thought process of what a good primary healthcare system should be, and they are now totally focused on primary healthcare. The leadership has understood that primary healthcare ke baghair kuch nahi hoga. So right now, PMDC is trying to revamp the curriculum in which the training of the graduates, postgraduates, because there was no primary healthcare training post-medical school. Everyone was training in the hospitals. And obviously, as you know, hospital training and the primary healthcare training is very, very different. So now what they're doing is they are mandating each medical college to just open a hospital, but 5 primary healthcare centers for training of the students and residents. So this is revolutionary. So the trend and the intellectual process has already started. But the problem is that is the first step. So we have to change the curriculum, emphasize on primary healthcare, which cater to 80 to 90% of healthcare needs in Pakistan. If you look at any effective healthcare system like NHS or the Canadian system, they have a very robust healthcare system. And this is where we need to focus and develop. So the SINA starts in 1998 when I came back from the US and started to understand the primary healthcare system in Pakistan. And obviously, it was very obvious that we need to develop a whole system, not just do in silos system. And we presented our model to the WHO M region in August 2023 as a care model for primary healthcare, and it was well received over there. And since actually before we presented it, WHO has actually come up with 10 levers, operational levers of how a primary healthcare system should work. So what we have done is we've taken that 10 levers and we have developed our system according to that. And we
out of nine of us, we can actually claim that we are doing that. So I think the first thing is you need a very robust model or a system with training. Doctors are trained in that system. The second challenge was you can have a nice infrastructure, a nice clinic, and the nurses, but the nurses and the doctors are not trained for primary healthcare. So we have to revamp the training as well. And this is a very big task. This is something that I think our PMDC is starting to do, but I think even the medical colleges and the residency programs should start doing. So that's so the system, number one. Second is training of the multidisciplinary approach. Like we all said, that our system is doctor-driven. It has to be multidisciplinary-driven. The doctor cannot do everything. They need a support team to provide the proper care to the patient. So training ke baad, basically it comes on implementation of that system with accountability. So हमारे वहाँ ये होता है कि आप डॉक्टर को आपने या नर्स को आपने एम्प्लॉय कर लिया and then कोई पूछता नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस कैसी है. So this is something, accountability has to come. Until accountability comes, don't expect any kind of quality care. So we have worked on that in our system also. We have started with the audits of the doctor performance, and we have a very robust quality performance audit system for the doctors, and we re-educate them. If they have any shortcomings, we train them. That's the third thing. The other thing is, this is age of digitization. We need a very robust 360-degree digital platform which will integrate all kinds of care. So we are in the process of developing a multidisciplinary digital platform, especially for primary healthcare, in which the doctor, the nurse, the nutritionist, the physiotherapist, the social worker, the pharmacist will have their own domains in which they can put their documentation of what kind of care they gave to the patient. So we have to move on to the modern technologies. And once we have done that, then we should work together, and then we come up with a national standard, like NHS. See, NHS is a national standard. We should work together, all the academic institutions and the NGOs and the private sector. They should come up with a national standard of primary healthcare. And then things are going to start happening. So that's my 2-bit. Thank you so much, Dr. Asif. So a shift from the doctor-driven current model, accountability, digitization of services, and as we have gone through 4 of our panelists, I think all of them are agreeing that although there's 5 years left till 2030, but the primary healthcare has huge amounts of lacunae, and we are all aware of it. So we can definitely shift towards device policies to address them. Next, I move on to the primary healthcare systems, the public primary healthcare system specifically, and the maternal and child health services. So, Mr. Javed Jagrani Saab, who is the CEO of the PPHI, you have successfully expanded and improved the PHC network in Sindh, especially for the maternal and child health services. Please, can you share the public partnership model, this particular model, how it has evolved in Sindh, and how do you think that this model can be leveraged in our mixed health system to achieve the primary healthcare and universal healthcare coverage goals? Thank you very much. Thank you very much. Yes, as far as PHC is concerned, with the perspective of this PPP mode, basically this public-private partnership, that's maybe if not that much new, but in the recent past, it's a new type of management model which has achieved good results in different sectors. So with this approach, government of Sindh applied this. Initially, federal government, all of the provinces, and then Sindh government, specifically in Sindh province, they adopted this approach in health sector and particularly in the primary healthcare side. So it really has brought good results and good fruits as far as primary healthcare is concerned, because I'll just briefly touch upon why it is so, because it is addressing system issues, basic issues with which our governmental public sector system was stuck up with.
why it was not delivering, why it was health facilities in far-flung areas were not delivering. So it basically this new model whereby PPSHA is working under an MOU with the government of Sindh, it addressed those core issues which were inherent in those public sector health facilities. Number one, financing model. The government of Sindh came up with under this PPP model. We have a different financing model whereby one line grant is given to PPHI. It is PPHI who has to decide, who has to prioritize funding allocation. Before this, it obviously was different model, and prioritization was not being done. So this solution, this one line single line grant, really gave a space in terms of prioritizing the areas, geographical areas, services areas where by a true delivery can be done. Number one. Number two, then administrative independence. These were the two issues which were inherent, as I told you, as far as primary healthcare facilities were of concern of government of Sindh. So when I say administrative independence, here PPSHA is totally independent to take administrative decisions in terms of HR hiring, in terms of aligning services with the modern day approaches and all that, which was missing earlier. So with these few but basic inherent issues addressed with this PPP approach, obviously there has been a topsy-turvy change as far as PHC is concerned. Once I share the results, when PPH started some around 14 years back, few of health facilities were handed over by government of Sindh for its management, and right now the number is 1400 plus, which means in terms of the coverage, we are managing 40% of primary healthcare as far as population is concerned, the whole of the Sindh. And in terms of rural Sindh, we are covering more than 60% of primary health coverage. So we basically came up with a new idea with same issues, and the coverage is day by day increasing. Geographical coverage is increasing, whereby PPSHA is operating in all far-flung areas of province of Sindh. Maybe it's tough areas, hard areas like Kashmir, Tharparkar, Kambar district. So we are everywhere in the whole of the province. In terms of financial coverage, analyzing services being given by PPHI vis-a-vis UHC, this is another important component of UHC, that in terms of financial equity, financial facilitation, the UHC services have to be provided, keeping the financial position of the patients also. So in their terms, PPSHA is providing 100% all the services free of cost, which means addressing this particular issue of UHC. In terms of services coverage, we are focusing upon all the indicators which are covered under universal health coverage, all the priority indicators, which happens to be 30. In majority of the indicators, the PPSHA is providing a comprehensive and 100% package, which happens to be around more than 40 to 45%. Around 30% of indicators we are giving partial services, and there are still 15 to 20% of indicators as far as UHC is concerned, whereby PPSHA is not providing those PHC services. And obviously it depends upon government of Sindh. We have taken up this particular case with the government of Sindh so that a comprehensive package of UHC is provided to the population of government of Sindh. Having said that, the good thing is we have, government of Sindh has piloted one project at Tanduwala, whereby a comprehensive EPHS project and package has to be given at Tanduwala. That will be pilot. And the target is that the UHC coverage in terms of essential package of health services has to be comprehensive. All those indicators, the priority indicators in terms of service delivery at PHC health facilities has to be, the target is that all those priority services are given to clients, to patients at the health facility level. So this is really a good start, whereby we are going to digitalize services. We are making the service package more comprehensive. So in winding up my discussion, I will just say that
obviously this PPP this novel approach has worked as far as primary healthcare is concerned. Number one. Number two, more efforts are required. Obviously, if the package has to be comprehensive Sindh government, and we are negotiating with Sindh government. More health facilities, maybe 100% of primary healthcare facilities have to be given to PPHI, and once that is done, hopefully this whole UHC package will be comprehensive in Sindh. Thank you. Thank you so much, Avid sir. So administrative independence that comes with the public partnership model has been very successful in Sindh, and if we look into this model, it could possibly be something which we can utilize, and other provinces can also utilize this model, which is solving some of the key issues and being able to administer the 3 pillars of the universal coverage. So for the second round, we have identified all these problems, and I think we are all agreeing to it with all your expertise. We all know what the problem is. Now, if you can all just give us 2 to 3 solutions or recommendations, what should be the direction of working in this time constraint of 5 years, trying to achieve universal health coverage through primary health care? Just 2, 3 recommendations from each one of you. Sir, aap se. Thank you. One thing I think we must keep in mind is that universal health care is not a luxury. It is right of every child that is born, irrespective of caste or pocket or whatever. So far, whichever model you look at, private-public model in Sindh, this is not really a private-public model. It's more of a philanthropy-driven model. That you have people, because there are more industrialists in Karachi and in Sindh, and there are very, very rich people and too many poor people. So there are very good people who want to donate something to for the base of the pyramid. So that is being, I think, used. But if you go to the rural Sindh, which I have myself gone to rural Sindh many times, I think the coverage there is, nowhere near that we need to be. I think the universal health care in Punjab, they have tried